Okay, just check all the previous places which we have already covered. Done? Done? Checked? Okay. So now one by one you have to tell. Okay, it's not the case that only one person is telling all the places. Okay, so what all places we have covered till now? Places where computer is used. You can raise your finger like this, or here also there is an option with which you can raise your finger. Okay, you can raise your hand like this. So yes, who will tell me one by one? Yes, Aryan. Aryan, unmute yourself. हाँ, कौन से प्लेसेस हमने कवर किए हैं? No? Okay, okay, no problem. No problem. Yes, Gaurang, unmute yourself. Gaurang Tambe, हाँ बोलो. Computer used in school. Very good. Computer used in school. Very good, very good. Okay, next Samyak. Yes, unmute yourself, Samyak. In banks. In banks. Yes, we got it. In bank. Very good. You're right. Okay, Janvi. Yes, unmute yourself. Janvi, unmute yourself. जानवी अनम्यूट कीजिए. आई थिंक आपने कैमरा बंद कर दिया. ओके ओके, लेट मी गो. सी चाइल्ड नेम, यू हैव टू लॉग इन विद द चाइल्ड नेम प्लीज पेरेंट्स. सार्थ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर. स्कूल एंड बैंक हो गया, अदर देन स्कूल एंड बैंक. यस सार्थ. हाँ बेटा. Land shop. Hotel and shop. Yes, hotel and shops. Yes, good. Okay, there are still some places are remaining. School done, hotel shops done, and bank done. What else? What else? Come on, your memory is very much sharp than me. Okay, so you should be able to remember all these things. Yes, who will tell? Other children, why you are not? Yes, Vinesh, unmute yourself. Unmute कीजिए बेटा. हाँ. Home. Home. Very good. For what? किस लिए? Home आप घर पे किस लिए यूज करते हो? क्या करते हो आप घर पे कंप्यूटर पे? Watch movie. Watch movie. What was this? Listen music. Right? Very good. To play games. Yes, we did this. Yes. Yes, beta. Yes. Good, good. Okay. Yes, Deepak. Unmute yourself. Ma'am, offices. Offices. For what purpose? किस लिए यूज करते हैं? मम्मी पापा से नहीं पूछना है. राइट, दिस इज अ ब्रांड. मैंने नहीं पूछा, मुझे पता है. अरे वाओ, गुड गुड गुड. सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेस? थिंक थिंक थिंक. क्या करते हैं पेरेंट्स ऑफिस में? व्हाट दे डू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर? कि बस ऐसे ही लेते हैं कंप्यूटर सामने? मैम, टेलीकेशंस. टेलीकेशन. व्हाट इज दिस टेलीकेशन? Maybe they are keeping record, sales record, or they are making presentation, or they are making report. Am I right? Are you all getting me? समझ में आ रहा है? Yes, do you all agree with me? Yes, Samyak is agree. Others are not showing me thumbs up. If you are agree, you should show me thumbs up. Yes, good. So now this was about the revision. Now let's start with the new places. Okay. Do you want to visit new places where computer is used?
Do you want to visit new places? Yes? Okay. So let's come with me. We'll visit the new places where computer is used. Oh, today we are going to have the bus visit. We are going to have the airplane. We are going by airplane and train. Right? Suppose you want to visit your relatives' place, maybe Nana Nani, Dada Dadi, cousins, right? And you want to go by train or maybe bus or maybe by flight, right? Airplane. So what do you do? Your parents are क्या करते हैं? Parents क्या करते हैं? Ticket book करते हैं. So they do a reservation. Do you know what is the meaning of reservation? Anyone? किसी को पता है reservation का मतलब क्या होता है? What is the meaning of reservation? Anyone? किसी ने कभी नहीं पूछा पेरेंट्स से टिकट रिजर्वेशन करते हो मतलब क्या करते हो? Why they do reservation? Yes, Arush, unmute yourself. हाँ बोलो रिजर्वेशन का मतलब क्या है? What do you mean by reservation? पता नहीं है कोई बात नहीं है. आई एम देयर टू टेल यू. सी रिजर्वेशन मीन्स वॉट. कुछ बच्चों का ऐसा होता है ना कि मम्मा पापा आई वांट टू विंडो सीट. मुझे विंडो सीट चाहिए. मुझे बाहर का दिखना चाहिए. करते हो ना आप ऐसा? ऐसा बोलते हो ना आप? आई वांट अ विंडो सीट. यस आई लव विंडो सीट. कितने लोगों को पसंद है विंडो सीट? रेज योर हैंड. How many people love window seat? Yes, right. So if you want your favorite seat, hand down, दर्द करेगा, it will pain otherwise. Okay. So if you want to reserve मतलब book करके रखना your favorite seat. और फ्लाइट में कुछ लोग का होता है कि लेग स्पेस ज्यादा होना चाहिए ताकि हम पैर फैला सकें, राइट? सो इफ यू वांट टू बुक योर फेवरेट स्पेस, योर फेवरेट सीट, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एडवांस में टिकट बुकिंग करते हैं. This process is called as the reservation. मतलब you are reserving your seat or you are booking your seat well in advance. आप ये चीज एयरप्लेन के लिए भी कर सकते हो, बस के लिए also you can do, ट्रेन के लिए you can do this, right? So nowadays everyone whenever you have a planned visit, मतलब आपको पता है कि आपको कौन सी डेट पे जाना है, so you do a reservation. And to do this reservation you will use computer. I know nowadays your parents must be using mobile phones, right? But you can do the reservation on the computer. Now जैसे reservation करते हैं, sometime it happens ना, आपके पापा को कुछ suddenly office में काम आ जाता है और your mother gets suddenly some urgent work in the office, so आपका trip cancel हो जाता है. होता है ना ऐसा? मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है? Yes? Yes, sometime it happens. कभी कभी अर्जेंट काम आ जाता है तो कैंसिल करना पड़ता है, राइट? और आप पोस्टपोन करते हो, है ना, कि इंस्टेड ऑफ थर्ड विल गो टू द फिफ्थ, तो आप पोस्टपोन करते हो डेट, राइट? सो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? आपने तो आपका फेवरेट सीट बुक किया है, सो यू हैव टू डू अ कैंसलेशन. सो यू हैव टू डू अ कैंसलेशन. कैंसलेशन मतलब टिकट कैंसिल करवाना, है ना? सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज कंप्यूटर. So for reservation and cancellation of ticket, you can use computer. And आप internet का use करके ये कर रहे हो, so that ticket is called as e-tickets. That is electronic tickets. Previously also two E's we have seen. E-book, that means if you are reading a book on the internet, so that is called as e-book. And also one more E we have seen, e-payment. If you are doing a payment with the help of internet, online payment करते हैं हम लोग, right? So that is e-payment. And now this is a third E, e-tickets. इंटरनेट पे आप टिकट बुक कर रहे हो, मे बी ट्रेन, मे बी बस, मे बी फ्लाइट, प्लेन का, right? So this is called as e-ticket. So repeat after me. Computer helps. You have to say after me. Computer helps in reservation
and cancellation of tickets. Very good. Okay, now see the next picture. See the next picture. What is happening is, see, sometimes आप जब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको आवाज आती है, this train is delayed by so and so minutes, है ना? तो उनको कहाँ से पता चला, है ना? वो अनाउंसमेंट करते हैं, this train is coming on this platform and this train is delayed by so and so minutes or so and so hours because of the rain, right? Is it raining outside? It's raining outside in my area. Is it raining in your area also as well? बारिश आ रही है ना? हाँ, I'm loving it. So sometimes because of the rain or other things, train get delayed, right? और आपको ये टिकट बुकिंग करते वक्त आपको you need to check the train timing या फिर फ्लाइट का टाइम आप चेक करते हो, right? Arrival means आने का टाइम, departure means जाने का टाइम, right? So you need to know the timing, है ना? नहीं तो आप नाना नानी को बताओगे कैसे कि आप कितने बजे पहुंचने वाले हो? You should know the timings, right? और अराइवल कितने बजे आने का वो भी टाइम पता होना चाहिए, so that you will be reaching airport or railway station on that particular time. Before that time आपको टाइम पता होना चाहिए. So how to check the timings? How to check the timing and who will keep the record? ये ट्रेन का, फ्लाइट का अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, right? So to keep the record of all this, you can use computer. इतने सारे trains है, इतने सारे, so many flights are there, and so difficult for a human being to keep remember everything. So there is a computer where you can check for particular flight कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है. So what is the time of the flight, arrival time, and what is the departure time, so that you can plan your journey accordingly, right? So to see this, you can use the computer. Okay, let's repeat after me. Computer helps in keeping records of arrival and departure, of arrival and departure. Very good. Okay, now the third one. Okay, see the pink box. What is written in the pink box? Computer helps to keep track of location, speed, and direction of trains. See, simultaneously lots of trains are running, lots of flights are flying, right? So how they get the direction, which flight is going in which direction and which flight is coming from which direction, right? Because all the flights are flying in the sky, right? So there has to be some device with which they will come to know, okay, we are in this direction, we are moving in this direction. Same goes with the train, because there are tracks and train is running on that tracks. Simultaneously lots of trains are running. So check the location, कौन सी ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, कितने टाइम से लेट होने वाली है, right? To check the speed, है ना? फ्लाइट का भी स्पीड होता है, एरोप्लेन का, ट्रेन का भी स्पीड होता है, बस का भी स्पीड होता है, right? So to check the speed, to check the location, where is currently the bus is, where the currently train is, right? या फिर आपका एरोप्लेन currently किस लोकेशन पे है, so that they can calculate the time, कितने टाइम में पहुंचने वाला है, right? If they know the location, they can calculate the time. Even you can calculate the time if you know the location of the bus, है ना? So to do this, to keep record of all this, you can use the computer. Keep track of, repeat after me, keep track of location, speed, and direction of trains and aeroplanes. Okay, so let's revise everything related with the aeroplane and railway station, airports and railway stations. Okay, Rakshan, you concentrate over here to me. Okay, let mama talk. You concentrate. आप स्क्रीन की तरफ देखोगे, ठीक है? Okay.
So the computer helps in, so now you have to say this word with me, okay? Reservation. Reservation. And cancellation of tickets. Arrival and departure of trains and flights. Keep track of location, speed, direction of trains and aeroplanes. Yes. So did you get it? Did you all get it? Did you all get it? Yes. Good. 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 Very good. Okay, let's go to the next. Oh, next is hospitals. हॉस्पिटल में क्या होता है? कौन कौन होता है हॉस्पिटल में? Who will tell me? Yes, Arnav, unmute yourself. Arnav Gunzavte. Yes. Unmute दबाओ. Unmute लिखा होगा वहां पे क्लिक करो. हाँ बोलो. डॉक्टर्स, नर्स. पेशेंट नहीं होता? यस मैम, पेशेंट भी होता yes, है. yes, 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 yes. Patient भी होता है. Yes. So in hospital we have doctors, we have nurses, we have patients, and we have machinery. Machines होते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे equipments. Lots of equipments are there. Even आपका अगर बीपी भी चेक करना है तो बीपी के लिए भी उनके पास equipment होता है. जैसे पंपिंग करते वो लोग, है ना? So they have all the equipments. Do you know they wanted to get the accurate result. अगर कुछ भी वो टेस्ट करते हैं, they should have a accurate result. नहीं तो उनको कैसे मेडिसिन देंगे पेशेंट को? So nowadays, in whichever place possible, right, they uses computer, so that computer will help them to get a accurate results. जो भी सपोज ब्लड टेस्ट करना है या फिर बॉडी चेकअप करना है, so उसके लिए डॉक्टर wants accurate results. They don't want any mistakes in their patient result, right? Because depending on the results, they will be giving the medicine, right? And computer never make mistake. We have seen this in the first standard, है ना? First standard second lesson we have seen computer never makes mistake, computer never gets tired. computer कभी बोलता है कि मैं डे नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा? नहीं. Computer is a machine. Computer can work 24/7. So computer never make mistake, computer never get tired, right? So for that, in hospital area, computer is used. For what purpose computer is used? Let's see. Look at the first image. Is it look like some cartoon character? बहुत सारे ऐसे हाथ दिखाए हैं वहां पे, ऐसे हाथ, right? Now this machine is nothing but robotic arm. हाथ बनाया ना ऐसे बहुत सारे, है ना? And it's a robot. Yes, 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 it's a robot. और ये robot क्या करता है? The way doctor do the operations, this robotic arm can do a critical operations. जो भी critical operations है, the doctors can take help of robotic arm. arm है ना, हाथ है, डॉक्टर हाथ से ऑपरेशन करता है. So computer इस रोबोट के अंदर है. This robot is nothing but an invention of computer. Computer का ही invention है robotics. So with the help of robotic arm, the way doctor do the operation, doctor take help of robotics to do the operation. So doctor will sit in the front of the computer and operate this robotic. और फिर robotic operation करेगा. अब आप बोलोगे डॉक्टर क्यों operation नहीं कर रहा? Robotic, why robotic is doing the operation, robotic arm? Because with the help of manual hand,
देयर माइट चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि हमारा देखो हाथ शेक करता है, आप कितना भी कांस्टेंट ऐसे रखने की कोशिश करो, नहीं, हैंड थोड़ा शेक होता है हमारा, राइट? एंड व्हेन डॉक्टर नीड्स टू डू अ क्रूशियल ऑपरेशन एट दैट टाइम, बिकॉज मशीन को अगर आप ऐसा खड़ा करोगे तो मशीन वैसे ही खड़ी रहेगी, राइट? मशीन अपने आप हिलेगी क्या? नो, मशीन विल नॉट शेक, right? Because it's a machine. So at that time, robotic arms is used to do the critical operations. Okay, so computer using robotic arms helps a doctor in doing operations. Next picture, can you see this one machine is here and the patient is keeping going inside that machine to have the body checkup, and this lady doctor is checking on the computer. This lady doctor is checking on the computer what all things is there in body, right? So the report she is checking, इनको क्या हुआ है patient को, right? So the computer helps in diagnosing various disease. अभी क्या होता है, previously what was happening is डॉक्टर बहुत सारे ट्रायल करते थे कि लेट्स ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं. So what was happening, to know the disease कि उनको हुआ क्या है, ये समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता था. And then after that they start with the medicine, right? So nowadays they have very advanced technology. Hospitals are having very advanced technology. So उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि okay, what is the problem with the patient, what is the disease, so that they start medicine, right? तो वो patient जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी recover हो जाता है, right? So with the help of computer, it helps in diagnosing various disease. क्या बीमारी है वो पता करने के लिए computer use होता है. See, this lady is checking on the computer, है ना? Yes. Now look at the third picture. किसी का चेस्ट एक्सरे निकाला है एंड दे आर चेकिंग इट, दैट एक्सरे चेक कर रहे हैं ये लोग, है ना, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, है ना, मेडिकल रिपोर्ट्स. आजकल कभी आपने देखा है कि डॉक्टर कोई हाथ से आपको लिख के रिपोर्ट दे रहा है? रिपोर्ट हाथ से लिख के देते हैं क्या? नहीं, एवरी टाइम द रिपोर्ट इज कंप्यूटराइज्ड. वो प्रिंट आउट ऐसे स्कैन कलरफुल प्रिंट आउट में रिपोर्ट आती है ना. So to prepare the medical report, computer is used. So computer में they will check all the things, जैसे कि इन्होंने पूरा DC check किया, diagnose किया कि what's the problem, and they have generated the report with the help of computer only, and then they hand over the report to you, है ना. So let's revise it. So first, in the first picture, what is happening? Doing the operations. Doing the operations. Sarth, you want to say something? Unmute yourself. Unmute कीजिए. हाँ, yes. हाँ. एक्चुअली वो ध्रुव जैन करके है, उनके मम्मी का फोन आया था, उनका डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली. तो अभी आपने लॉक कर दिया है क्या? No, meeting is not locked, ma'am. It's open. तो meeting वो, is not locked. अच्छा वो ओके, मैं बताती हूँ उनको. वो okay, फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन because नहीं I कर cannot सकते. see, मुझे यहाँ पे वेटिंग में दिखा नहीं उनका नाम, क्योंकि मैं I Okay, am मैं बताती admitting. Yes, yes, ma'am. ओके, थैंक यू. Welcome. Okay, so let's revise it. Doing the operations. Diagnosing various disease. Very good. I know these words are a little bit difficult for you, but yes, we are going to do that. We are going to say it. Okay. Preparing medical reports. Preparing medical reports. Very good. So now you come to know that for all those things we use computer in the hospital. Doctors are using computer for the hospitals. And now we all are coming in 21st century and lots of higher technology, right? Everything is using, everywhere there is a computer use. Okay, let's see what is written over here. A robot is a machine that is controlled by a computer. रोबोट अपने आप नहीं चलता है, देयर इज अ कंप्यूटर, उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोबोट
works. Because of that only robot works. So robot अपने आप नहीं चलेगा. You need to have a computer to operate the robot. Diagnosing means to check what is wrong with a sick person. Diagnosing करना मतलब क्या है? Diagnosing means you need to check the patient. Doctor need to check the patient what is wrong with it. उनको क्या हुआ है? If they are having a fever, why the fever is coming? So diagnosing means check करना. Okay. Okay, let's move to the next one. So आज हम लोगों ने starting क्या देखा? Airports and railway stations. This we have seen. And then we have seen hospitals, use of computer in hospitals. Now let's move to the third one, in designing. Okay, how many students love to draw and paint? Drawing and painting किसको किसको अच्छा लगता है? Okay, okay. और देखने तो मुझे किसी के लोग का हाथ है. Vignesh is also there. Arush is also there. Okay, Rakshan is also there. Okay, Suvarna Khude. I know this is a boy, but why your mama's name is written over here? हाँ, next time आपका नाम होना चाहिए. Yes. Janvi, you don't like to drawing and paint. आपको अच्छा नहीं लगता drawing and painting? नहीं? Okay. Okay. ठीक है. Okay, so you everyone loves to do drawing and painting. Yes, I saw your hands, I saw your fingers. Okay, now in designing means you can use the designing जो भी interior designing करते हैं, cartoons बनाते हैं. These people use computer to do the animation and to do the designing. So let's see what are the uses. In the first, you can see this person is designing a building. बिल्डिंग का पिक्चर दिख रहा है इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. कैन यू सी इट? हंसिका, लुक हियर. सो कैन यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दिस पर्सन इज डिजाइनिंग अ बिल्डिंग. ये लोग डायरेक्टली जाके बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं करते. दे फर्स्ट डिजाइन अ प्लान. वो पहले प्लान करते हैं ऑन कंप्यूटर. दे प्लान्ड इट, दे शो इट टू द क्लाइंट. और अगर क्लाइंट को अच्छा लगता है तो फिर वो एक्चुअली बिल्डिंग बनाते हैं. राइट. सो ये किसका काम है? ये आर्किटेक्ट का काम है. So the computer helps architect in designing buildings and houses, right? So ये एक architect है and this architect is using computer to design building and houses. इससे पता चलता है, वो client को बता सकते हैं कि ओके ऐसा आपका बिल्डिंग दिखेगा, ऐसा आपका घर दिखेगा. चेंजेस चाहिए क्या? So they can make changes in the computer and when the final design is ready, उसके बाद फिर घर बनाना स्टार्ट करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दे फर्स्ट डिजाइन इट इन द कंप्यूटर कि मेरा घर कैसा होगा. है दे टेल द रिक्वायरमेंट टू द आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट डिजाइन इट फॉर देम. है ना. सो डिजाइनिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेस. नेक्स्ट what this person is doing, this person is designing machine. जैसे घर को डिजाइन बनाने के पहले वो लोग they are making a design in the computer. Same way बिफोर डिजाइनिंग कार बनाने से, एक्चुअल कार बनाने से पहले, एरोप्लेन बनाने से पहले या फिर कोई भी मशीन बनाने से पहले दे फर्स्ट मेक अ डिजाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर 3D वाले भी डिजाइन्स बनते हैं. राइट. एंड दे फर्स्ट शो द डिजाइन्स टू द क्लाइंट. और अगर क्लाइंट को वो अप्रूव हुआ देन दे एक्चुअली डिजाइन. जो आपकी कार है ना, आपके पापा की कार, Suvarna Khude, name is written over here. Why this boy is not looking at the screen? First of all, you are not supposed to sleep. Sit properly. Sit properly. How are you supposed to sit in the classroom? The same way you have to sit here also. Class is online. It doesn't mean that you can sleep and just lay down on the bed and you can listen to it. No. You're supposed to sit properly and listen to it. Okay. So before the actual car comes on the road, it is designed with the help of computer. ये देखो यहाँ पे एक machine design कर रहे हैं with the help of computer, right? So designing cars, designing aeroplanes, designing other machines, all this is designed with the help of computer. And third one, can you see cartoon? Yes, आप जो टीवी पे कार्टून देखते हो, somebody is making that movie, somebody is doing the animation. So creating and designing animations, movies, advertisement and many other things with the help of computer.
कंप्यूटर में बनते हैं आपके एनिमेशंस, कार्टून जो है ना, टॉम एंड जेरी, पेपा पिग और पता नहीं कितने कितने, माशा एंड द बेयर, है ना, कितने सारे कार्टून्स होते हैं. So they use computer to design, to animate your cartoons. Okay, so let's revise it. Let's say after me: designing buildings, designing buildings, houses, designing cars, aeroplanes, designing animations, movies, advertisements. Computer is used. तो मतलब टीवी पे जो आप कार्टून देख रहे हो वो कंप्यूटर की हेल्प से एनिमेशन उसमें डाला है. आपको लगता है ना कि टॉम ऐसे जोर 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 से भाग रहा है जेरी के पीछे, राइट? सो वो एनिमेशन किया होता है. दे हैव डिजाइन्ड इट, और वो डिजाइन को बार बार वो रन करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि टॉम भाग रहा है, बट एक्चुअली टॉम इज नॉट रनिंग. दे डिजाइन्ड वन ब्लैंक जहाँ पे टॉम है और जेरी उसके पीछे है, और वो स्क्रीन को बार बार एनिमेशन करते हैं. सो यू फील लाइक कि टॉम एंड जेरी आर रनिंग, बट दे आर नॉट एक्चुअली रनिंग, right? So that is a part of animation जो कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है. Okay, so these are the uses within the designing. So let's revise everything. So airports, railway station, computer is used to reservation and cancellation of tickets. Reservation and cancellation of tickets. Second हमने देखा arrival and departure of trains and aeroplanes. Third हमने देखा to keep track of location, speed, direction of trains and aeroplanes. This we have seen in airports and railway stations. In hospitals, you know the robotic arms, right? Robotic arms doing the operations, diagnosing various diseases with the help of computer. Patient को क्या बीमारी है, that you will come to know with the help of computer. And third, preparing medical reports. Patient का reports बनाने के लिए you use computer. So these are the uses in hospitals. And in designing, come to your cartoon part. Okay, so architect designing buildings and house. Architect designing buildings and house with the help of computer. Designing cars, aeroplanes, other machines. Designing animations, movies, advertisement with the help of computer. With the help of computer. So this till this part will we have seen today. Next part will complete in the next lecture. Okay. So now let me ask some questions. Okay. Now who will tell me what is the use of computer in airport? जितना आपको समझा है. Okay. What is the use of computer in airport? एयरपोर्ट पे क्या यूज है कंप्यूटर का? या फिर आप यस कौन बताएगा? Yes, Varsha, but I know your name is not Varsha. Maybe it's your mother name. Yes, हाँ. टिकट मैम. टिकट, बट टिकट का क्या करना है? टिकट निकालने के लिए. टिकट निकालने के लिए. हाँ, तो उसको बोलेंगे टिकट बुकिंग के लिए, है ना? टिकट बुकिंग के लिए. और यस, गुड बेटा, गुड. और बाकी लोग सिर्फ टिकट बुक करने के लिए? यस विघ्नेश, अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ विघ्नेश मोकाशी, हाँ बोलो.
Yes, I can hear you. बोलो बोलो. Yes, हाँ. Yes, Vignesh. कलेक्शन टिकट. कैंसिलेशन टिकट. ये कैंसिलेशन. इन्होंने बताया पहले टिकट बुक करने के लिए, विघ्नेश ने बोला टिकट कैंसिल करने के लिए. वेरी गुड. और कौन बताएगा मुझे ट्रेन से रिलेटेड क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटेड विद द ट्रेन? सोचो सोचो क्या क्या बताया था मैंने. यस सम्यक, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करना पड़ेगा बच्चा पहले. हाँ. कीप ट्रैक ऑफ Of- लोकेशन. keep track of location. Very good. What else we need to keep track of other than location? एक तो location का हमको track करना पड़ेगा. What else we have to keep track? Yes, Arush Kumar, unmute yourself. हाँ बोलो. You again went back to mute.